The other thing that I noticed is जब निशा जी और अंबर भाई बात कर रहे थे तो आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, ध्यान से सुन रहे क्योंकि आप भी 2 साल से समझ गए हो कि कुछ तो गड़बड़ है. There is something terribly wrong, and the way the world has been run, especially in the last 2.5 years, उसमें सवाल तो आए. वो आए ऑटो रिक्शा वाले को भी, आए हैं आपके किराना दुकान वाले को भी, और जो सब्जी तरकारी बेच रहे हैं उस सबके दिमाग में आए कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक कांड है. मैं पिछले 35 सालों से जन आंदोलन में हूँ. आई स्पेशलाइज ऑन इंटरनेशनल रिसर्च, आई स्पेशलाइज ऑन फॉल्स फ्लैग टेरर अटैक्स. सो दैट इज व्हाई व्हेन दिस पैंडेमिक सो कॉल्ड केम अलोंग, इट वाजंट डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ अस टू फिगर आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन. और मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, there are certain keywords which we mentioned, which we wanted to note down and do your own research. So I know we don't carry books and pens anymore, but my request is please open your mobiles and type in those words which we are going to tell you and do your own research. Please do that. Please do that, all of you. अरे कर लो भाई. Point is that the organization which we have founded is called Awaken India Movement. हमारा मकसद जो था कि जो हमारी भारत की जनता है उनकी आंखें खोली जाए और सवाल पूछे जाए, क्योंकि जो बातें इस मन से हुई है, they are totally opposite of what the media is telling you 24/7. so बात सही है ना? Totally 360 degrees अलग बातें हम लोग कर रहे हैं. जो वो बोल रहे हैं टोटली उसका अलग बोल रहे हैं. और हम लोग ने ये रिसर्च करने के बाद, आई एम द पेटिशनर हु वेंट टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, द केस दैट अंबर भाई रेफर्ड टू, एंड द केस वाज वेरी सिंपल, एंड फ्रॉम देयर आई विल ट्राई एंड से व्हाट आई एम सेइंग. दे स्टॉप्ड ट्रेन ट्रैवल फॉर द अनवैक्सीनेटेड. बराबर. मैं मेरे कॉलेज के दिनों से लगातार आई स्टडीड इन जेवियर्स, तो द बॉम्बे लोकल ट्रेन इज माई लाइफ एज इट इज द लाइफ ऑफ अ लॉट ऑफ मुंबईकर्स. तो तब हम लोग, हमारे जो वकील है एडवोकेट नीलेश ओझा, फॉर ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द एंटायर वर्ल्ड, वी वेंट टू हिम एंड सेड दैट दिस इज जस्ट नॉट अलाउड. बिकॉज एक लड़का है, वो लड़का कौन है जो मर गया? नितेश कादवे. नितेश कादवे 23 साल का लड़का, एक आम मामूली कारीगर था वो, और ही डिडंट वांट टू टेक द वैक्सीन. विरार में रहता था, लोअर परम में शायद काम करता था. वैक्सीन लिया, 3 घंटे के बाद हार्ट अटैक. हिज मदर इज अ विडो एंड सम ऑफ आवर फ्रेंड्स वेंट टू मीट हर एंड वी आर फाइटिंग हिज केस आल्सो. तो वो मजबूर हो गया था कि ट्रेन में अलाउड नहीं होगा, तो उसने वैक्सीन ले ली. अभी यहां सवाल 2-3 आते हैं. एक तो देयर इज नो लीगल एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी on crooks like Cyrus Poonawalla, Adar Poonawalla, or Biotech, or Covishield, or Pfizer, or whatever. That is why Pfizer did not come into it. So anyway, the point is that there is no legal or financial liability on pharma vaccine manufacturers, right? But they are saying you take the vaccine, but it is not compulsory. Government ने कभी नहीं बोला मैंडेटरी है, मगर औरंगाबाद में कलेक्टर का एक ये निकलता है कि डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा. नासिक में वो लोगों ने कहीं राशन कार्ड के साथ जोड़ दिया, कहीं तो दारू की दुकान के साथ जोड़ दिया. मेक इट इम्पॉसिबल फॉर पीपल टू इवन ट्रैवल, जॉब्स, एक्सेस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. ये बना दिया था कि वैक्सीन कंपल्सरी नहीं है, मगर आपको लेना तो होगा. मैंने नहीं लिया, हम लोग लड़े ना. उन्होंने फेक वैक्सीन सर्टिफिकेट बनाया, क्योंकि बहुत से लोग ने फेक वैक्सीन सर्टिफिकेट भी बना कर लोग काम करे, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. So one is, it is clear that vaccines are not mandatory, but where we won in the Bombay High Court is you cannot discriminate between the vaccinated and unvaccinated. आप भेदभाव नहीं कर सकते. और ये 5 हाई कोर्ट जजमेंट सुओ मोटो आ चुके थे. बॉम्बे हाई कोर्ट में हम लोग गए और बॉम्बे हाई कोर्ट में हम लोग जीते. पूरे देश में जो आज मैंडेट हटे हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के कारण, और जो प्रशांत भूषण और जेकब पुलियल लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट में, उसके कारण ये जीत हुई है. जब महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार को ये पूरे देश में से मैंडेट हटाने पड़े. दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेकन इंडिया. दूसरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कि यहाँ निशा जी और
ये जो हमारी पूरी जो टीम है बम्बई की, जो अलग अलग हमारे जो साथी है, every day they go to schools and talk to the principals and tell them you cannot enforce vaccine mandates on children. अगर आपने किया तो 7 साल की सजा आप समझ लीजिए. कानून, क्योंकि आम जनता को पता नहीं, टीवी पे बोला जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी यूसेज ऑथराइजेशन के तहत वैक्सीन आपको लेनी होगी. ये सभी झूठी बातें थी. पॉइंट इज कोविड केम इन फेब मार्च. हमको बोला घर में बैठो, लॉकडाउन हो गया. द लॉकडाउन वाज ए सोशल इकोनॉमिक डिजास्टर. और इसमें साथियों एक टर्म लिखिए, द ग्रेट रीसेट. द ग्रेट रीसेट and the other term you need to write is the new world order. The fourth you need to write is Klaus Schwab, the founder of the World Economic Forum, जो बोलते हैं that you will own nothing and be happy. What is he saying? लॉकडाउन के माध्यम से आपकी इकोनॉमी टूटेगी, आप कर्जों में जाओगे, आप बैंक को अपने बिजनेस और आपका घर गिरवी रख दोगे, यू विल फाइनली बिकम प्रॉपर्टीलेस, आप रेंट पे निकल जाओगे. दिस इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड दे वांट टू बिल्ड, एंड दिस इज इन अ बुक कॉल्ड द ग्रेट रीसेट, written in 2015. The Great Reset, the Fourth Industrial Revolution. These are all written public documents published by the World Economic Forum, जो Davos के जो cabal है. These are not things that the media will tell you, because the media today is basically a corporate cabal. The pharma industry is even more powerful than the weapons industry, and today they are ruling us. The other point is understanding the crook called Bill Gates. लोगों को लगता है बहुत बड़ा philanthropist है. He is not a philanthropist. Bill Gates invests his money in the billions in pharma companies and makes double and triple that money. That is his philanthropy. And today Bill Gates controls the World Health Organization, and the World Health Organization is controlled by pharma companies. Tedros is again not some doctor. So through the World Health Organization, they want to supersede our constitution and try and implement these pharma company laws on our country. So please understand the kind of battle we are fighting. So my point is, along with these cultural programs, you need to have a honest debate, both sides, about this entire issue. And I think if your college, your institution can take this initiative in terms of trying to understand this issue, we can actually organize a panel of doctors and scientists come and talk to you all, and lawyers. But this is about the survival of every Indian, of all of humanity. So that is why these terms that came, these ridiculous kind of terms, asymptomatic. What does asymptomatic mean? Asymptomatic means that I am healthy. So they are saying healthy people should be tested. Okay? And we have fought. We have gone through our reports domestically at least, and we fought because ICMR, Indian Council of Medical Research, clearly said that healthy people do not be tested. Okay. Now the point is that why is all this being done? And this is what I'll end with. They are trying to build what is called the New World Order. And the New World Order is no hidden secret. You please type it in your mobiles and please go and research all these issues we're telling you. A New World Order that will be based on control of every human being, which is what the vaccines are about. Where we are made to wear masks, so we are all fearful and we live in fear and insecurity. Where these lockdowns destroy our economies and make us more and more in debt. And remember the term they used, non-essentials. क्या वो पान की दुकान वाला का एसेंशियल नहीं है? क्या जो ट्रेन में जाने वाला बम्बई कर जो अपने अपने रोजगार पे निकल रहा है वो एसेंशियल नहीं है? Who decides who is essential and not essential? They made 95% of the people of this country are non-essential. We all are not required. Sit at home. And people could not sit at home. Those workers had to go marching back to their cities and towns and villages where they came from. So the point is that it has taken 20 years in the planning for them to get to this stage. Actually, the New World Order plan goes way back to the 1960s, if not earlier. We are working on an entire document on that issue. So there is a larger plan where corporations control governments, and through governments they control
people, ordinary people. And this is the kind of battle that we are facing today. It is about our freedom, individual freedoms. It is about the sovereignty of our own country, and it is about the constitution of this country. So these are serious questions which need to be grappled with by youngsters, because I saw highly talented, thinking types. All your songs were also very deep. So you all are a thinking group of youngsters, and the teachers and the director and so on and so forth that you all have. A massive attack on humanity. I can see it in your faces that there are questions that you all have, and those questions, from questioning starts the process. That is what the Buddha did. For the Buddha, it was that questioning was fundamental to the Buddha's thought, and that is the essence of this country. That is why the kind of ideological challenge that has arisen against the New World Order is arising from India. The kind of legal challenge that we have posed and we have won. This is the only team in the world that has actually won a legal case on these issues. So the point is that our own culture has been about questioning, and through questioning we will arrive at answers. But the way the entire pandemic has been, forced upon us through the media, where every political party, every central and state government is saying only one thing, because the kickbacks are massive. The vaccine kickbacks are in lakhs and lakhs of crores. It's not in thousands of crores. It's about 2 vaccines booster, and it carries on and on. And these are not free. These are the money that we are paying through overpriced petrol and diesel and gas, and through the inflation, which is now 14%. So on the one side, we are being looted dry, and on the other side, we are being destroyed and made mental and physical slaves. So our point is that Awaken India movement is there with you. Those who want to join us, please do. We will come back to your college whenever we are called. But a serious discussion of about 3 hours with PowerPoint presentations and question answers, and real because you all come from very good households, and the kind of study that you are undergoing, and you all are questioning minds. Okay. तो उसमें साथियों इतना ही बोल दूं कि हम जिस परंपरा से आते हैं वो परंपरा है आज़ादी के संघर्ष की। ये साल है 75वां साल आज़ादी का, हमारा अमृत महोत्सव है, और वो अमृत महोत्सव के दौरान इस देश की आज़ादी का सवाल, इस दुनिया की आज़ादी का सवाल और हर मनुष्य का मुक्ति का सवाल, वो उद्देश्य लेकर आज हमारे आपके बीच में आए थे। धन्यवाद साथियों। Thank you so much, Mr. Mithiborwala and his team, for kind words, and truly we are very thankful for efforts made by Awaken India movement for past few years. Please give a huge round of applause for them.